Dear students, in the last lecture, we have thoroughly seen the properties of LC driving point immittance function with examples. In today's lecture, we will discuss the realization of LC driving point immittance function using Foster-1 form for LC network. To understand today's lecture more clearly, I request the viewers to kindly see my last video whose link is given in the description. Now, let us see Foster-1 form for LC networks. The first condition is that the given function to be synthesized must be a driving point impedance function. जिस फंक्शन को हमें सिंथेसाइज करना होता है वो फंक्शन क्या होना चाहिए? इम्पीडेंस फंक्शन होना चाहिए, दैट इज ZS. Second and most important thing is that the given impedance function must satisfy the properties of LC driving point immittance function. उसके बाद next step is we will take the partial fraction of the given impedance function. तो partial fraction लेने के बाद हमें क्या मिलता है? Summation of various impedance functions, that is in this way. So a network can be realized by connecting the different impedance functions, that is Z1s, Z2s, Z3s and so on in series. So it means जब भी हम Foster-1 form LC नेटवर्क को रियलाइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है? हम डिफरेंट जो इम्पीडेंस फंक्शन हमें पार्शियल फ्रैक्शन से मिले हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. नाउ LC ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन को रियलाइज करने के लिए हमें इस तरह का इम्पीडेंस फंक्शन गिवन होना चाहिए. इस इम्पीडेंस फंक्शन में क्या है? इसमें एक या तो पोल होगा रीजन पे या हमारे पास जीरो होगी रीजन पे. इस फंक्शन में हमारे पास पोल गिवन है. इसके अलावा जितने भी और पोल्स या जीरोस गिवन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में अवेलेबल होते हैं. जब हम इस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं तो हमें इस तरह का फंक्शन मिलता है. इस फंक्शन में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज बिकॉज ऑफ इफ देयर इज ए पोल एट ओरिजिन. अगर हमारे पास जीरो है और रीजन पे पोल नहीं है तो ये जो टर्म होगी हमारे पास मिसिंग होगी. इसके अलावा जितने भी और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स और जीरोस हैं उसके लिए हमारे पास मिडिल टर्म्स अवेलेबल हैं. और जो लास्ट टर्म है ये कब अवेलेबल होती है? ये तभी अवेलेबल होती है अगर हमारे पास न्यूमरेटर की s की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो और उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन लेते हैं तो हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल होती है. Now let us see in brief the rules of partial fraction. The main condition is that the maximum power of s in the numerator, it must be less than the maximum power of s in the denominator. This is the first condition before performing the partial fraction. अगर ये condition आपकी met नहीं करती तो we will perform long division first. That is, if the powers of numerator, if the powers of s in the numerator are greater than the powers of s in the denominator, then we have to perform long division first. The first term is this type of function is available. What is this? Here this is the pole at origin. These are the two linear terms. So these can be written in this form. That is, for pole we write simply a upon s and the linear terms in this way. Now if we have a repeated term and the denominator, then the partial fraction of this type function is given in this way. So this is the third form that is very important. This will be beneficial to us in our numerical problems. इसमें क्या होता है? हमारे पास एक पोल दिया होता है हमारे पास ओरिजिन पे और उसके अलावा जो दूसरे पोल्स हैं वो सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर होंगे. तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपली पोल को लिखने के लिए तो हम एक ही रेजिड्यू का यूज करेंगे, दैट इज a अपॉन s. और जब भी हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिए हम यूज करते हैं bs plus c type residues. So where A, B, C are known as the residues. Possible forms of LC immittance function to be synthesized with the Foster-1 form. जो हमें ZS given होता है उसकी forms किस तरह की हो सकती हैं? पहली form हो सकती है it is having a pole at origin, and other than that it is having complex conjugate poles and zeros. This condition must be satisfied that omega 1 should be less than omega 2, should be less than omega 3 and should be less than omega 4. अगर ये condition satisfy नहीं होगी
तो आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज पोल एंड जीरोस इंटरलेस ईच अदर, वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। नाउ जब हम इस तरह के फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है बिकॉज देयर इज ए पोल एट ओरिजिन, एंड अदर टू टर्म्स बिकॉज वी हैव कॉम्प्लेक्स कंजुगेट poles available. So here k0, k1, k2, k3, k4 these are called as the residues and we need to find the value of these residues. और जब भी इस तरह के फंक्शन में हम देखेंगे, जब हम इन रेजिड्यूज की वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस सेकंड रेजिड्यू इन द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल दैट इज k2 एंड k4, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हम आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। So let us we consider it k2 and k4 0. So this is the modified ZS function, impedance function. So now this impedance function can be written as a summation of different impedance function that is Z1s, Z2s and Z3s. So now take first function that is Z1s. Z1s is nothing but k0 upon s. अब इसको सॉल्व करने से पहले हमने जो पहले एक टेबल किया था उसको देख लें। उस टेबल में क्या था, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है तो इम्पीडेंस फंक्शन में हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए रेजिस्टेंस, और एडमिटेंस में हम ट्रीट करते हैं उसको एज ए कंडक्टेंस दैट इज 1/n। अगर हमारे पास इंडक्टर गिवन है, इम्पीडेंस में हम उसको ट्रीट करते हैं SL, और कंडक्टेंस में हम इसको डील करते हैं 1/SL। कैपेसिटर को हम लिखते हैं इम्पीडेंस में 1/SC, और YS में हम क्या लिखते हैं दैट इज सिंपली SC। नाउ सी in this function, in this Z1 function, we have S in the denominator. Now let us see in ZS where is S in the denominator? This term that is 1/SC. So the term that is the coefficient with the S, it is nothing but a capacitor. Now further we simplify it as, now this is the case 1 upon this coefficient term that is 1 upon k naught 0 is multiplied with S. So we can say write this as 1 upon C1s. So here the first term is treated as capacitor C1 whose value is equal to 1 upon k naught. Now take the second term. Second term in this way. To solve this type terms, we will first convert the impedance function into admittance. Right, Y2S is equal to just reciprocal of Z2S. In this way, just simplify it. So now we see in the table for Y2S, here we have in the first case, in the first term, we have S in the numerator. Now let us see where is S in the numerator. That is this last term, that is SC. So it means the term, the coefficient which is multiplied with this S, that is nothing but 1 upon K1. This is a capacitor, that is C2. So in the second term, that is we have S in the denominator. So now let us see where is S in the denominator in YS, that is this case, that is 1 upon SL. So the second term, that is this coefficient, this is nothing but a inductor. We can write in this way, the first term as C2 and the second term as L2. So we see that in Y2S, C2, whenever we talk about Y2S, Y2S means it is a admittance. It always represents the parallel combination. So we have a parallel combination of C2 and L2. Similarly, for the third term, that is Z3S, we will have a parallel combination of C3 and L3. Now let us see what kind of circuit we will obtain. This type of circuit will be represented as, so C1 the first term, it is nothing but for Z1S, that is a capacitor. This is a parallel combination for Z2S. This is a parallel combination for Z3S. अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इम्पीडेंस फंक्शन को देखेंगे। इस फंक्शन में क्या है, हमारे पास जो पोल है वो ओरिजिन पे प्रेजेंट नहीं है। इस केस में हमारे पास जो जीरो है वो ओरिजिन पे प्रेजेंट है। हमारे पास दो ही पोल प्रेजेंट हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारी जो प्रॉपर्टी है पोल्स एंड जीरोस इंटरलेस ईच अदर ऑन द जेमेगा एक्सिस वो सेटिस्फाई नहीं होगी, और हम इस फंक्शन को एलसी कंपोनेंट्स के साथ सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। सो जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म आती है जो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फर्स्ट पोल पेयर के लिए है। ये सिमिलरली हमारे पास एक सेकंड टर्म आती है जिसको फर्स्ट टर्म को हम Z1S से बोलते हैं, सेकंड टर्म को हम Z2S के साथ बोलते हैं।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, जो हमारे रेजिड्यू K2 एंड K4 होते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगी। ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। सो द मॉडिफाइड फंक्शन इज गिवन एज इन दिस वे। सो दिस टाइप फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इम्पीडेंस फंक्शन को एडमिटेंस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस इम्पीडेंस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है। We will write it as 1 upon y1s and plus 1 upon y2s। अब हम पहले फर्स्ट एडमिटेंस फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट एडमिटेंस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस एडमिटेंस फंक्शन में हमारे पास एक s न्यूमरेटर में है, एक s डिनोमिनेटर में है। तो देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या होगी, एल और सी में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अभी इस टेबल से देखें, एडमिटेंस फंक्शन में जो कोफिशिएंट s के साथ मल्टीप्लाइड होता है उसको हम कैपेसिटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोफिशिएंट s जब डिनोमिनेटर में होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम l के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट मीन्स this by 1 s is nothing but it is a parallel combination of capacitor and inductor। उसी तरह से जो हमारी सेकंड टर्म है zs की, इसी को भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? कैपेसिटर होगा। सेकंड क्या होगा? हमारा इंडक्टर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं गिवन impedance function is a series combination of two parallel L and C networks। So let us see इसका सर्किट कैसा बनेगा। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ LC क्या रिप्रेजेंट करता है? Z1s, एंड जो सेकंड वन है इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट Z2s। नाउ वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ इम्पीडेंस फंक्शन। इस इम्पीडेंस फंक्शन में क्या है, इसमें हमारे पास जो s की पावर न्यूमरेटर में है वो 4 है और s की पावर जो डिनोमिनेटर में है वो 3 है। इसलिए हम इसको सीधे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज अवर इम्पीडेंस फंक्शन। नाउ विल परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। सो दिस मेथड you people all know how to perform the long division. After performing long division, we are getting three things, that is remainder, quotient and divisor. Then ZS can be written as quotient plus remainder upon divisor. So we will write the ZS function as this is our quotient, this is our remainder and this is our divisor. So now in this function, if we see that the power of s in the denominator it is 3, whereas power of s in the numerator it is 2. Now we can perform the partial fraction of this function. So we have a pole at origin, so we'll write as a upon s, and then we have a complex conjugate pole pair. So now we have three terms. The first term, that is a upon s, second is a complex conjugate pole pair, and third is the ks, that is the quotient. Now we'll see one by one. Z1s, that is the first term. We know that we can write it as a 1 upon cs, that is C1 is equal to 1 upon a farad. Second term, we know that it can be solved by converting the impedance function into admittance function. We have already seen. So here this 1 by b, it is a capacitor, whereas this term is a inductor. From the second term, we are getting a parallel combination of L and C. Whereas the third term, that is Ks. Now if we see from the table, that is whenever S is multiplied some coefficient, that coefficient is nothing but it is a inductor. So here in the third Z3s, we have an inductor whose value is K Henry. Now we'll see the final circuit. So in the final circuit, we are having a capacitor, then we are having a parallel combination of inductor and capacitor. Finally, we have a inductor. Now we will solve the examples one by one. In the first example, it is given that Zs is equal to s square plus 3 to s square plus 1 s square plus 9. In the examination, the question is always asked that realize the given impedance function. ये हमें कभी नहीं बताया जाता इसको LC से करना है, RC से करना है, RL से करना है। ये स्टूडेंट्स को खुद ही चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन LC की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, RC की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या RL की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी तक हमने सिर्फ LC की प्रॉपर्टीज ही देखी हैं। नाउ वी विल चेक कि ये फंक्शन जो है हमारा क्या LC की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी,
इट इज ऑलवेज रेशियो ऑफ ऑड टू इवन और इवन टू ऑड पॉलिनोमियल। अगर हम इसमें देखें, इस केस में हमारी न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर कितनी है 3, डिनोमिनेटर में कितनी है 4। इट मीन्स इट इज a रेशियो ऑफ ऑड टू इवन, दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें, द पोल्स एंड जीरोस आर ऑलवेज लोकेटेड ऑन द jmeg axis। इफ वी ड्रॉ इट्स पोल जीरो प्लॉट, we have all the poles and zeros at imaginary axis. Then second property is satisfied. Now as per the third property, the poles and zeros are simple. That means there are no multiple or repeated poles. तो अगर हमने पोल जीरो प्लॉट से देखें, कोई भी पोल और जीरो रिपीटेड नहीं है, इट मीन थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो satisfied. As per the fourth property, the poles and zeros interlace each other, that is on the jmeg axis. That means there are no consecutive poles or zeros on the jmeg axis. So now if we see, we have this is a pole, then zero, then we have pole, then a zero, then pole, then zero, then pole. It means no two poles or two zeros are consecutive. It means all the pole and zeros are interlaced to each other. It means fourth property is also satisfied. Now we'll see the fifth property. Imaginary poles and zeros occur in the form of a complex conjugate. So if we see the poles, this is the first pole. Here we have poles plus minus j, then we have pole plus minus j3, then we have 0 at plus minus j under root 3. It means all the poles and zeros occur in the complex conjugate pair. That means fifth property is satisfied. As per the sixth property, the highest power of numerator and denominator must differ by 1. So in the numerator, the highest power is 3. In the denominator is 4. It means difference between these two is equal to 1. That means this property is also satisfied. Next property is the lowest power of numerator and denominator must differ by unity. Again, the lowest power in the numerator is 1, in the denominator it is 0. The difference between these two is 1. It means this property is also satisfied. Next property is there must be either pole or zero at the origin and infinity. Now if we see, we have a 0 at origin. Now to check whether the pole is at infinity or 0 is at infinity, अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 3 है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4 हैं। इट मींस एक जीरो इन्फिनिटी पे है। इस केस में क्या हो गया, एक जीरो रीजन पे है, एक जीरो इन्फिनिटी पे है। इट मींस हमारी आठवीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। नाउ वी सी द नाइन्थ प्रॉपर्टी, रेजिड्यूज एट द इमेजिनरी एक्सिस पोल्स आर रियल एंड पॉजिटिव। ये हम चेक करेंगे आफ्टर टेकिंग इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। And the last property is number of elements required in any of the four forms are equal to the highest power of s in the immittance function. इसका कहने का मतलब है, इसको हम रियलाइज करेंगे एलसी फंक्शन के। तो एलसी कंपोनेंट हमें कितने चाहिए, वो डिपेंड करता है कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास 4। इट मींस हमें एलसी कंपोनेंट्स कितने चाहिए, टोटल 4। इट मींस this example satisfies all the properties. Now we will start the realization of this function by using LC network. Now first step is we will take the partial fraction. So since we don't have any pole at origin, we will consider the partial fraction as as plus b upon s square plus 1 plus cs plus d upon s square plus 9. Now multiplying both sides by the denominator of the left hand side, we are getting this thing. Now further, after simplifying, we are getting this term. Now to solve further, we need to equate the coefficients of first S3. Equating the coefficients of S3, on the left hand side, the coefficient of S3 is equal to 1, whereas on the right hand side, we have 2a and 2c. So this is our first equation. Now equating the coefficients of S square, in the left hand side, there is no S square. So left hand side, it is 0. In the right hand side, we have 2b and 2d. This is our equation number 2. Then equating the coefficients of simply s, in the left hand side we have it is 3, on the right hand side it is 18a and 2c. So we can write in this way. This is equation number 3rd. Now equating the coefficients of constants, on the left hand side there is no constant, that is 0. On the right hand side we have 18b and 2d. So we can write in this way. This is equation number 4. Now we need to find the values of residues, that is a, b, c and d. Equation 1 from equation 3. So here after subtracting 1 from 3, 2c will get cancelled. Finally we have a is equal to 1 by 8. Now substituting the value of a in equation 1, we will find the value of c, that is c is equal to 3 by 8. Now to find the value of b and d,
we will consider equation number 2 and equation number 4. Solving the equation 2 and 4, we get b is equal to d is equal to 0. This thing we have already seen. Whenever there is a quadratic term, the residue function, that is second term, b and the d, that is always equal to 0. So this is satisfied. पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास दो टर्म्स आई हैं यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म. एक को हमने Z1s कहा है, दूसरे को हमने Z2s कहा है. हमें पता है जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म होती है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इम्पीडेंस फंक्शन को एडमिटेंस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, विच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस फंक्शन. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग दिस थिंग. So here in the admittance function, the coefficient of S, it is nothing but it is capacitor, whereas whenever the S is in the denominator, the coefficient of S, it is nothing but it is the inductor. So from the first ZS function, we are getting a parallel combination of capacitor C1 and inductor L1. Similarly, we can see for the second function, again we are converting it into admittance function, and we are getting a parallel combination of C2 and L2. Finally, this is our circuit. Here our C1 is 8 farad, then L1 is given as 1 by 8 Henry, C2 is given as 8 by 3 farad, and L2 is given by 3 by 72, that is 1 by 24 Henry. In this way, the given impedance function is realized by Foster one form for LC network. Now we will see the second example. In the second example, we have a pole at origin and complex conjugate pair. So this can be solved by taking partial fraction. This impedance function satisfies all the properties of LC driving point impedance function. Students के लिए ये homework होगा कि वो check करें कि इसके साथ सारी की सारी properties verify हो रही हैं या नहीं. By taking the partial fraction, whenever we take the partial fraction, first term is a upon s, second is bs plus c upon s square plus 4. So multiplying both sides by the denominator term of the left hand side, we are getting equation number 1. This is the further simplification. Now to find the value of a, substitute s is equal to 0 in equation 1. We are getting a is equal to 1. Now to find the value of b, equating the coefficients of s square, we are getting 4 is equal to a plus b. Now substituting a is equal to 1 into, we get b is equal to 3. Now to find the value of c, equate the coefficients of s, that is we are getting c is equal to 0. In this way, we are getting two terms. One is 1 upon s, second is 3s upon s square plus 4, that is z1s and z2s. So now the first function 1 upon s, we know that the coefficient of s, that is 1, it is nothing but it is a capacitor, that is c is equal to 1 farad. In the second term, we know that this type of term can be solved by converting the impedance function into admittance function, and finally we are getting C2, that is equal to 1 by 3 farad, and L2, that is equal to 3 by 1 by 3 farad, and L2, that is equal to 3 by 4 Henry. That is, for this Z2S function, we are getting a parallel combination of C2 and L2. So finally, this is the circuit. Here we are getting C1, that is 1 farad, in series with a parallel combination of L2 and C2. In this way, the given impedance function is realized by using Foster one form for L and C network. Now let us see the last example, that is example 3. In this example, the power of s in the numerator, it is 4, whereas the power of s in the denominator is 3. So as per partial fraction rule, if the power of s in the numerator is greater than the power of s in the denominator, we cannot directly perform the partial fraction. First we need to perform the long division. So we all are familiar with the long division. After performing long division, we are getting three terms, that is quotient, remainder and divisor. So we can write Zs is equal to Q plus R upon D. So we can write Zs is equal to 4s, that is quotient, R upon D, that is 24s square plus 36, it is R, s square plus 4, it is D. Now we will perform the partial fraction of second term, that is this term. So let us perform the partial fraction.
So by multiplying both sides by the denominator of the left hand side, we are getting this term. Now to find the value of A, we need to put S is equal to 0. We are getting A is equal to 9. Now to find the value of B, equate the coefficients of S square. So finally we get B is equal to 15. Now to find the value of C, we need to equate the coefficients of S. We are getting C is equal to 0. We have obtained the values of residues, that is A, B and C. Now we have these three terms. The first term, that is 9 upon S. The second term, we are having 15S upon S square plus 4, and the third term, that is 4S. Now we know that to solve the second term, we need to convert the impedance function into admittance function. Now let us take the first function, that is Z1S. It is nothing but, it is S is in the denominator, and the coefficient with the S, it is nothing but it is a capacitor. So we write it as Z1S is it is a capacitor C1. Z2S, we need to first convert Z2S into Y2S, and we are getting a parallel combination of C2 and L2. Z3S, it is simply 4S. If we see from the table, here S is multiplied by L. So here 4, it is nothing but it is an inductor. Now let us see the synthesized circuit diagram. Here we are getting C1 component, that is from Z1S. We are getting a parallel combination of C2 and L2, that is from Z2S. We are getting the third component, that is L2, that is from Z3. So in this way, whenever we have a pole at origin and we have a pole at infinity, in that case we are getting C1 and we are getting L2 component.